All right, let's start, see what happens. Okay, we will try to finish our topic on counters today. Counters. Uh, so counters, we talked about up and down counter in the last class, and so have a counter which can parallel load data input. That parallel load load done by setting and resetting individual flip-flops, direct setting or in resetting individual flip-flops. That's how parallel load is done. And if you want to think about it like this, you can think about it like this, that you have this counter, which is basically n-bit register. What is register? They are made up of D flip-flops. A register is a D flip-flops with combined clock. So these are the outputs of this counter and count and outputs. So on this side, we have n inputs. I can show it like this. N inputs. These are n outputs. So in up count mode, basically it is taking the current value, incrementing it and going and loading that value. So this value is 1 greater than this value. In down count mode, this value is 1 less than this value, so that when the clock pulse comes, that value is loaded onto the register. So if we can have a multiplexer here, where you have these values now going into this value over here, n-bit multiplexer, and a select line, and you have n-bit values over here, which you can select what value you want to load. So you have a switches here, parallel load values. So this is 0, this is 1. So basically, this is a mux, 2 to 1 mux, 2 to 1 mux. What it does is that when you make it 0, this value is presented over here, and depending on the up count and down count, it does the normal stuff, counting up, counting down. But when the select line is 1, this parallel load plays its part. So this value is presented over here. So when the clock comes, the counter is loaded with this value. So you can see here, this is a 2 to 1 multiplexer. Basically, it is n bit 2 to 1 multiplexer. So either these n can be selected to become the output, or these n values can be selected.
to become the output. So that way you can make it, if it is 0, it will go through the normal mode. But when it is 1, this parallel load will be loaded into this. So that's how you make a counter with the parallel load. Although, you know, there are already, so I just wanted to show you what technology or what is the circuit inside a parallel loadable counter. And there are arbitrary counts also. Counter. Arbitrary counters. Arbitrary counter is a counter that counts arbitrary sequence. Usually it starts from 0. And it can count any sequence like 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. This is a 3-bit arbitrary counter. So it's not a binary counter. It's just any. So it goes from 0, then it goes to 2, then it goes to 5, then it goes to 3. So any sequence you can generate, and then of course it goes back to, it can roll over to this here. 1, 1, 1, whatever it is, whatever is the sequence, it can be any sequence. So it will go through the arbitrary sequence and then it will go back to the reset state, this 0, 0 state. It's just designed just like that, that this is the present state, this is the next state, this is the present, next, present, next. And all the unused values that are not used, there needs to be, you know, like in this case, 6 is not used. So unused values should usually on next clock pulse, they should jump to 0, 0, 0. So any unknown unused value like 0, 0, 1 can also be there. Any unused value should make it come here. Any other unused value? 1, 0, 0, 0 is also there. So I can draw that if you like. 1, 0, 0. So this is an arbitrary sequence generator. One might ask, and often people ask, can you repeat a number? Can you repeat a number there so that the sequence can be, this is a sequence counter, 0, 2, 5, 3, 7, 0, 2, 5, 3, 7. So this is an arbitrary counter. So no number is repeating in one sequence. So this comma is the clock pulse. Here the comma is the clock pulse. 0, 2, 5, 3, 7. Sometimes it is shown like this also, 0, 2, 5, 3, 7, and so on. So it is goes like that, and then it come back to, so this is an arbitrary counter. You can make any counter like it. So sometimes people ask, what if we want 0, 2, 5, 3, 5, 0, 2, 5, 3, 5, 0, 2, 5, 3, 5, repetition of the same number in this arbitrary count. Then we'll have some number repeating. As far as this is concerned, if these deep flip-flop outputs are there,
you can't have the same state in the sequence. It's not possible. These state machine must have unique state numbers. I cannot have another 101 here. So how do we do this sequence? So this is non-repeating sequence. What you can say not non-repeating. It is repeating a sequence, but it doesn't have two same states. So all sequence states are basically unique. So answer to that question, that how can we make a flip-flop state machine that can repeat the same state? I'll answer that once we have done the memories. So once we have gone through the memories, then we'll see that we can have any, just like any state that we want, and any length of the sequence. So memories are going to give us a mean to implement very, very high complexity circuits, without using any key map or anything. Using memories, we will have infinite capacity, almost infinite complexity circuit that we will be able to use. And then you will be wondering, ये सारा कुछ हम करते रहे, algebra पढ़ा और के flip map पढ़े और सारा कुछ पढ़ा. What was the use of all that if we had a memory that can actually implement very high complexity circuit? Memory is expensive. That's one reason, but used to be expensive maybe. Let's study the memories first, and then we'll come back to why memories are not used, rather than why do we use this K-maps and simplify circuits. Memories can make circuits which are, almost infinite complexity circuit, almost. And without any simplification. है ना मदे की बात? क्या बात है मेमोरीज की, कमाल है मेमोरीज की. So the second thing is a shift register. Shift register is also very, very important component of ALU. Basically, ALU is not just a arithmetic and logic unit. It also includes a shifter. So basically, it is arithmetic plus logic plus shifter unit. So three functions it can perform: arithmetic, logic, and shifting. Because then you have this high-level language, A is equal to A shift left 1. So that requires that you need to have a shifting in the arithmetic unit also. So how is shifting done? In high-level language, usually, what is the shifting? We know that what is the shifting. If we have this number 101110, many of you may have already done the lab also. Shifting, this is called shifting left. This is LSB. This is MSB. So shift left would mean if I shift it once, this will come here, this will come here, this will come here, and 0, 1, 0. This one will be gone. What will come here? Here you will have what is called shift left input. So if it is 0, 0 will shift here. If it is 1, 1 will shift here. If I shift it again, another 0 will move in. If this is 0, then another 0 will move in here. So if I shift it again,
it will become 0, 0, 1, 1, 0, 1, another 0 here. सर जो हमारी शिफ्ट लेफ्ट की इनपुट है ये क्या डिटरमाइन करती है कि ये हमेशा 0 ही आएगी या 1 भी आ सकती है? कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में तो हमेशा 0 आ सकती है. ओके. But when you are using a shift register, there you have a switch pin that you can use to set. अगर आप उसको 1 कर देंगे तो 1 मूव करेंगे, 0 सेट करेंगे तो 0 मूव करेंगे. So in high level language, usually unsigned shift means that you just shift away and all the MSB is thrown away and LSB is having zeros coming in from the right side. Similarly, if you shift right, unsigned, shift right, unsigned. Unsigned shift right. In that case, this number 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, when it is shifted right over here, then this one comes over here, this one comes over here, this 0 comes over here, this one comes over here, this 0 comes over here, this one comes over here. What happens here? Here is depends on what is on the IC. It depends on what is the value that you want to shift, 0 or 1. You can set that. There is a pin. Whatever you are given on that pin, that will be shifted. It is 1 after all 8 clock cycles. All the values will be 1 on an 8-bit register. So, right? In signed shift, of course, we show a signed shift. अगर मैं बताना नहीं चाह रहा, confusing नहीं ज़्यादा करना चाह रहा, but in a signed shift, 1, 0, 1, 1, 0, it is usually shown it like this. That means signed, whatever is the bit here, that is shifted. Whether you are shifting left or you are shifting right, this bit stays here. So if you shift it right, it will become 1. This will be 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. So sign remains the same, and this one comes here. And that is correct, because if you look at this number, this is a negative number. And what is the value of this number? Yes, okay, this is a 7-bit number. I don't know why I made up an example with 7-bit number, but this is a 7-bit number. So what is this number? This one in sign form. This will be 0, 1, 0, 1, 0, 1, negative, which is 2, 8, 32, 42. Minus sign. This is minus 42. What is this number? This will be minus 21. And that it should be. So if I make this one, what happened here? 1 comes here, 0 comes here, 1 comes here, 0 comes here, and this 0 goes off. Sorry. This one comes here, this 0 comes here, this one comes here, this one comes. So this 0 goes out in right shift form. So this number, if you look at this in 2's complement form, this number is 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, minus sign. So this is 16 plus 4, 20 plus 1, 21. So this is 21. So as you can see here, the sign remains this. Now whether you are shifting right or whether you are shifting left, in sign number, sign bit is copied.
If it is 0, 0 will be copied. If it is 1, 1 will be copied. So that is called signed, sometimes it is called arithmetic shift. This is called logic shift. Logic shift, where shift is usually done with zeros coming in right or left in computer. This is called arithmetic shift. Most computers don't have arithmetic shift nowadays. They just have logic shift. So you have to find some hardware ways to uh, uh, take care of this. So when you do a signed number, there is not one assembly language code that is generated. It requires multiple assembly language instructions to do arithmetic shift. Only logic shift is done in one clock cycle or one instruction. This may require more than one instruction and to cater for the signed shift in assembly language. So that is basically shifting. So shift right means, logic shift right means shift every number to the right, and you will have one space here where you must add a 0. I wonder if the colors are visible today. Usually colors are not visible in this screen. So this is 0 coming here. आ रहा है कलर नजर? क्यों भाई, व्हाइट है या कलर है? Anyone? Sir, white. व्हाइट ही है? ओहो, बस फिर कुछ नहीं हो सकता, व्हाइट पे काम चलाएंगे. So that is shifting left and shifting right. How is this implemented in your hardware? Of course, we need to know everything. We started from gate level, and we are building hardware, and we must know what is there at the gate level. So we must know what happened at the gate level. So this is basically what happened at the gate level. We have a D flip-flop, a register as usual, D flip-flop, D flip-flop, a D flip-flop. Clock is common to all of them. And we have D input, D0, D1, D2, D3. We have Q's output, Q0, Q1, Q2, Q3. So simple one place shift is done using a 4-to-1 multiplexer. So we have 4-to-1 multiplexer over here. These are the select lines S0, S1, 4-to-1 mux. And this is where I find the most interesting use of a multiplexer. We have seen many uses of multiplexer, but I love the way multiplexer chemistry matches with this shift register, where usually we see, although book has not used this symbol, which is pretty annoying. Why they have not done that? When you study something, use that, and the book is not done that. So I'm not very happy with the book here.
4 of these 4-to-1 multiplexers. And of course, all of these multiplexers have same select lines. Same select lines. So select line 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. 4 inputs. On input number 1, we say gives Q0, Q1, Q2, Q3. Now what happens when if select lines are 0, 0, 0, what will be D0? It will be Q0. What will be D1? It will be Q1. What will be D2? Q2 and so on. So we say when select line is 0, outputs are going to be copied. So this is also D flip-flop. So that is the mode when we say that there is no change. Whatever is the input is copied back at the output. So we say that there is no change. So 0, 0 is the mode when there is no change. Okay, if you look at this is how it is. The hierarchy is like this: Q1, Q2, Q3. So shift left means Q1 should take place of Q0. Shift right. So let's make a Q. So we can say that shift right means Q1. So I can make Q1 over here. I can give here Q2. I can give here Q3. What do I give here? इसकी क्लॉक पल्स के बाद Q0 में Q1 कॉपी हो जाएगी, Q1 में Q2 कॉपी हो जाएगी, Q2 में Q3 कॉपी हो जाएगी. What happens to Q3? We call that shift right input. So this copy is here, this copy is here, this copy is here. What happens to this? We say that shift right comes here. So that means we can say when select lines are 0, 1, it will perform shift right. Similarly, we can have this over here. What should I connect here? Q2. What should I connect here? Q1. What should I connect here? Q0. What should I connect to Q0? Shift left. So when it is performing shift left operation, this comes here, this comes here, this comes here, this goes to oblivion, gone. This goes to oblivion, gone. What comes here? We have shift left input over here. That will move into this position. So this, we can install another switch over here. Now, you see the chemistry of this 4-to-1 multiplexer suits so much that it makes very nice. What now have we at the Q3, selection 3? यहाँ पे क्या करें? 1-1 पे क्या करें? Anyone? जब select line 1-1 हो तो क्या होना चाहिए? कोई बताएगा? Anyone?
क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ यू, उस्मान, 1-1 पे क्या होना चाहिए सिलेक्ट? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है ना, देखें जब हम 0-0 कर देते हैं, दोबारा बताता हूँ, 0-0 सिलेक्ट लाइंस होती हैं, तो Q0 ही क्लॉक के साथ Q0 पे कॉपी होगा, दैट मीन्स नो चेंज। 0-1 करते हैं तो ये इसकी आउटपुट इधर जाती है, इसकी इधर जाती है, तो शिफ्ट राइट परफॉर्म होता है। 1-0 करते हैं तो इसकी आउटपुट इधर, इसकी इधर, शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म होता है। तो क्वेश्चन इज वी हैव लेफ्ट विद वन चॉइस हियर, मोड चॉइस 1-1, इसके साथ क्या करें? एक चॉइस रह गया 1-1, इसका क्या यूज करें हम? हैं? कोई बात नहीं, कोई बंदा नहीं है जो बताएगा। पार्टिसिपेंट्स को थोड़े, क्या मैं कह सकता हूँ? सर ये तो क्या नो होगा चेंज ही रहने दे है? सर, नो चेंज ही रहने नो दे। चेंज ही रहने दे? नहीं, वो नहीं, बड़े एक मजे की चीज हम कर सकते हैं यार, नो चेंज क्यों रहने दें? बड़ा एक मजे का काम हमने करना है उसके साथ, वही तो सबसे अच्छा काम है। उसके बगैर तो शिफ्ट रजिस्टर का फायदा ही कोई नहीं है। वो काम है, ये तीसरी वाले इनपुट पे हम जो है ना स्विचेस लगा लेंगे। स्विचेस, इसको कहते हैं P0, P1, P2, P3, स्विचेस लगा सकते हैं सो दैट वी कैन पैरेलल लोड ऑन इनपुट। यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं, आखिर शिफ्टिंग करनी है उससे पहले रजिस्टर में कोई वैल्यू भी तो लोड करनी है। यू वांट टू प्ले विद सम डेटा, बट व्हाट इज द डेटा दैट यू वांट टू प्ले? किसको शिफ्ट राइट लेफ्ट करना? so this is a parallel load mode. Parallel load that gives you choice, पहले आप लोड करें कोई डेटा और उसके बाद उसको शिफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट कर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर आपने 8 बिट बनाना है तो बड़ा आसान है कि 8 बिट के केस में आप इसकी Q3 जो है तो वो इसकी शिफ्ट लेफ्ट को दे देते हैं दूसरे वाले की, तो ये 4 बिट का ये बन गया ना, ये वाला। दिस इज 4 बिट। So basically, the outputs are these are the outputs here. Someone said something. So these are the full outputs. So these are outputs. This is select shift left input. This is shift right input. This is parallel load inputs. This is the clock. This is the mode input, and these are the 4 outputs. So if you would like, you can make an symbol for this. These are select inputs: Q0, Q1, Q2, Q3. And you have a clock input. You have 4 inputs: P0, P1, P2, P3. And you have 2 control inputs that are here, SL and SR. So if your SL is 0 and if you are shifting left, so this will be called 4-bit shift register.
4-bit shift register. These are the two mode inputs. These are the two mode inputs. So these S0 and S1 can be called M0 and M1 from the mode point of view. So this is Sir? what is inside this. Yes. Sir, aren't Q the same as P but shifted? Like I'm confused about parallel load के उसमें और Q में फर्क क्या है in some sense. Like क्यों देखे ना, आप शुरू में जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या आउटपुट्स होंगी? initial वाली जो वो input जो रैंडम हुई थी. होंगी ना, वो तो you want know के what are these outputs, because D flip flop when it is powered on it has random outputs. So when you want to use it, you have to first put some values here. So for example, if I make this 0 1 1 0 for example, and I select mode here 1 1, then I clock this 1 1 का मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 यहाँ पे आ जाएगा, वो P0 है 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, because these are the inputs that will go through this selector and they will appear here. Now this is my step 1. कि आप मैं इस रजिस्टर में को वैल्यू तो लोड करूं, उसके बाद पहले मैं शिफ्ट लेफ्ट राइट नहीं कर सकता इसको. आई वांट टू लोड सम नॉन वैल्यूज. तो जब मैं 1 1 करूंगा तो ये 0 1 1 0 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्विचेस के साथ सेट की हुई है, या लॉजिक स्टेट्स मैंने दी हुई. यहाँ पे मैंने 0 1 1 0 सेट कर दिया. अगर आप हार्डवेयर में रहेंगे तो ट्रेनर के स्विचेस से आपने इसको सेट कर दिया है. तो जब आप इन दोनों को 1 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 0 1 1 0 आएगा. जब क्लॉक करें तो क्या होगा? क्या होगा क्लॉक करने के बाद? तभी 1 0 1 1 0 आ जाएगा. 0 1 1 0 आ जाएगा. अब ये वैल्यूज है, इनको आप शिफ्ट राइट करें, शिफ्ट लेफ्ट करें. अगर आप चाहते हैं कि यही वैल्यू रहे, आप 0 0 कर दें, तो यही 0 इधर से आ रहा होगा, यही 0 इस पे कॉपी हो जाएगा, यही 1 इधर से आ जाएगा 1, यही 1 इधर से आ रहा होगा 1. तो फिर ये शिफ्टिंग भी नहीं करेगा, बेसिकली शिफ्टिंग स्टॉप हो जाएगी. तो पहले आप वैल्यू लोड करते हैं, फिर आप देखते हैं कि इसको शिफ्ट करना है या नहीं करना. तो इफ यू डोंट वांट टू शिफ्ट इट, जस्ट मेक दिस मोड 0 0, so this will stick at the output. If you want to shift right, you can change this. If you want to shift left, you can do this. And if you want to parallel load the new value into this register, you have to make 1 1 to parallel load a new value. सीड भी तो देनी है ना इसको, कोई सीड वैल्यू भी तो देनी है जिसको आपने शिफ्ट करना है. सर आप एक दफा दोबारा कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं पैरेलल लोडिंग का? वो क्या करते हैं? वो ओरिजिनल को डिस्कार्ड कर देता है? जाहिर है एक ये वैल्यू राइट कर देता है ना. पैरेलल मोड का मतलब है कि इस रजिस्टर में नई वैल्यू राइट करो. जो भी वैल्यू होगी वो राइट हो जाएगी. तो बेसिकली अगर हमारे पास एक 8 बिट का रजिस्टर है, या 4 बिट का ले लें, 4 का ले लें, 4 बिट का रजिस्टर है S0, सॉरी ये हमारे पास है शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, और ये 4 आउटपुट्स है हमारे पास Q0 Q1 Q2 Q3. यहाँ पे मेरे पास है मोड इनपुट्स हैं 0 M0 M1. ये हमारे पास 4 इनपुट्स हैं P0 P1 P2 P3. ये है आपका रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर. यहाँ पे मैंने 4 स्विचेस लगा दिए हैं. तो फर्ज करें ये स्विचेस पे मैंने 1 1 1 0 दिया हुआ है. अब मैं ये चाहता हूं कि ये वैल्यू यहाँ पे अपीयर हो. अब मैंने इसको दोनों को 1 1 करके तो क्लॉक करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी.
तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 0। अब मैं अगर इसको दोनों को 0 0 करके, ये पैरेलल लोड मोड है, 1 1 किया, आउटपुट हो गई हमारी 1 1 0। अब 0 0 किया, ये क्लॉक है, इसके बाद क्लॉक 0 0 किया, आउटपुट में नो चेंज 1 1 0। अगर मैं 0 1 करता हूं फिर क्या होगा? तो फिर ये क्या किया था हमने 0 1 के लिए? शिफ्ट लेफ्ट किया था, शिफ्ट राइट किया था? शिफ्ट राइट। अगर 0 1 किया है तो 0 1 किया है तो ये शिफ्ट राइट क्लॉक करूंगा, 0 1 करके क्लॉक करूंगा तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 गॉन, शिफ्ट राइट हो रहा है, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो शिफ्ट राइट इनपुट हमने दी होगी वो यहाँ पे दी होगी। यहाँ पे भी आपने स्विच लगाया, यहाँ पे भी लगाया। अगर ये 1 दिया हुआ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी 1 0 1 1। अगर ये 1 है, 1 आ गया यहाँ पे। फिर मैं यही 0 1 ही रख के फिर क्लॉक करते, इसको नहीं छेड़ता, मैं मोड को नहीं छेड़ता, मैं फिर इसको क्लॉक करूंगा, इसको भी 1 ही रहने देता हूं, ये 1 1 0 1 हो जाएगा। इसको फिर 1 रह के फिर क्लॉक करता हूँ, फिर ये हो जाएगा 1 1 1 0। फिर एक दफा करूंगा तो ये 1 1 1 1। बेसिकली ये 1 जो यहाँ से चला था तो यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, पीछे 3 1 और चलते हुए आ गए। अब अगर इसको मैं 0 करके फिर शिफ्टिंग करूंगा तो फिर क्या होगा? 0 करके शिफ्ट करूंगा इसको, यही वैल्यू ले लेता हूँ 0 0 0। अब मैं शिफ्ट राइट इनपुट को इसको 0 कर देता हूँ, शिफ्ट राइट इनपुट को 0 करके करता हूँ, फिर क्या होगा? फिर ये 0 आ जाएगा 1 1 1, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0। सारा 0 ने कॉपी कर दिया, सारा पकड़ के सारा ले गया उधर। सो लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू जो थी, मैंने जिसको शिफ्टिंग करनी थी वो कोई वैल्यू तो होनी चाहिए जिसको मैं स्टार्ट करूं। मैं ये नहीं कर सकता कि पहले इसको 1 करके शिफ्ट करूं, फिर इसको 0 करके शिफ्ट करूं, 4 5 वैल्यू दे के फिर अपनी डिजायर्ड वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करके लेके आऊं। मैं चाहता हूं कि पैरेलली सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाए, एकदम से चारों की चारों आउटपुट चेंज हो जाए, बजाय इसके कि मैं थ्रू शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट मैनिपुलेट करूं और 4 क्लॉक साइकिल में सारा डाटा इस पे लोड करूं। आई जस्ट वांट कि मैं डायरेक्टली इसको सेट कर सकूं वैल्यू। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो आपको मिलती है, जो जिससे आपने शिफ्ट करना है, वो यहाँ पे आप स्विच कर देते हैं। 1 1 करेंगे तो ये मैटर करेंगे, अदरवाइज दे डोंट केयर। 0 0 करेंगे तो यही वैल्यू कॉपी हो जाती है, 0 1 करें तो शिफ्ट लेफ्ट होती है, शिफ्ट राइट होती है। 1 1 के साथ सर ये अभी हमने शिफ्ट राइट को 0 इनपुट दी हुई है। कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर सर वो आपने डब्बा शिफ्ट राइट को सर ऊपर हाँ इन द 0 दी डायग्राम हुई है, 0। हाँ 0। सर हम 0 दे रहे हैं इसलिए वो एसआर एक्टिवेट कर रहा है। नहीं, वो तो यहाँ से एक्टिवेट हो रहा है ना, मोड से। शिफ्ट राइट का मतलब ये है कि जब ये शिफ्ट राइट होगा, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? शिफ्ट राइट हुआ है ना, तो ये वेकेंट स्पॉट पे क्या आएगा? एक बाइनरी वैल्यू तो आनी है ना यहाँ पे, इस वेकेंट स्पॉट पे। वो बाइनरी वैल्यू ये आती है, क्योंकि वहां से हमने 0 किया हुआ इसलिए 0 आएगा, वहां पे 1 किया होता तो यहाँ 1 आ जाता। यहाँ 1 आ जाता, बिल्कुल। तो जो भी शिफ्ट राइट सेटिंग है ना, शिफ्ट राइट बिट है, वो बिट यहाँ पे आती है, शिफ्ट राइट बिट। ये तो मोड है। 1 1 से ये वाली वैल्यूज कॉपी होती है, 0 1 से शिफ्ट राइट होता है। इसको मैं 0 करूंगा और इसको 1 करूंगा तो ये शिफ्ट राइट हो जाएगा। उस वक्त ये वैल्यू मैटर कर, ये डोंट केयर। ये स्विच, इस स्विच को हमने क्या सेट किया हुआ? जब 1 0 करता हूं तो फिर ये वैल्यू डोंट केयर हो जाती है, ये वैल्यू मैटर करती है। इसको 0 किया हुआ या 1 किया, क्योंकि उसके इसमें से इधर को शिफ्ट करना है। तो अगर इसको मैं अब शिफ्ट राइट करता हूं
तो ये हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इस ब्लैंक खाली कुर्सी जो पढ़ाएगी, इस खाली कुर्सी पे कौन आएगा, वो डिपेंड करता है आपने यहाँ पे क्या सेट किया हो शिफ्ट लेफ्ट इनपुट पे। अगर यहाँ 1 सेट किया हो तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 सेट किया हुआ है तो 0 आ। तो 1 1 करूंगा तो ये वैल्यूज आउटपुट पे चली जाए, और अगर मोड पे 0 0 करता हूं नो चेंज, आउटपुट वही रहती है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को बार बार वो कॉपी करता जाता है। So that is basically a shift register with parallel load. All right, so that's all about counters and shift register. Sometimes we can also do this, that like let's say 1D flip flop. इसको कह लें Q3 है, एक Q3 वाला फ्लिप फ्लॉप लेते हैं शिफ्ट रजिस्टर में से, और 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर है। And what I'm going to do here is I'm going to use 8 to 1 mux. This is one of those flip flops in my shift register, just one. So I have 3 select lines, S0, S1, S2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now this with having an 8 to 1 multiplexer, we can actually do something even more amazing with this shift register. We can do something even more amazing. When these are 0, 0, 0, select line 0, 0, we say that we collect Q3 here back, so that there is no change. This value is copied to D input, and that is copied to the output. So no change. Here we can say that we want to do parallel load. Some value we can want to load with these select lines. What about the other 3? For other 3, I'm going to do is I'm going to use Q0 here, Q1 here, Q2 here, Q4 here, Q5 here, Q6 here. Now, can anyone tell what is going to happen with the select lines? Select lines S0, S1, S2, 0, 0, 0. Q3 after clock cycle have Q3, no change. 0, 0, 1. Q3 after clock cycle have a new value, parallel load. 0, 1, 0. Q3 is equal to Q2. ये क्या हो रहा है? Q3 is equal to Q2. तो शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है। Q2 इधर आ रहा है ना, तो ये शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है। 0, 1, 1 पे क्या हो रहा है?
0 1 1 पे क्या हो रहा है? Q3 किसके बराबर होगा? After clock cycle, what will be Q3? What will be Q3? 0 1 1, ये क्या लिखा हुआ? ये नजर आ रहा है आपको? Q1, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? Q3 में Q1 जाएगा, Q4 में Q2 जाएगा, Q5 में Q3 जाएगा। हर एक ये वाला नेबर नहीं जा रहा है, एक नेबर छोड़ के ये वाला जा रहा है। अब क्या हो रहा है? Anyone? Q3 में Q1 जा रहा है, ये वाला। ये क्या कर रहा है? मतलब पहले था ना, अगर 1 1 0 1 1 1, तो ये आपका Q3 है। इसको 0 कर लेते हैं। तो अगर एक दफा शिफ्ट हो तो फिर ये वैल्यू जाती है यहाँ पे। अगर दो दफा शिफ्ट हो तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली इट्स टेकिंग वन आफ्टर वन नेक्स्ट डोर नेबर, not next door neighbor, neighbor after the next door neighbor. So this one will take, हर एक ये देखेगा, अपने से अगली वैल्यू ले लेगा। So basically this is going to be equal to that q, this is going to be equal to q3 q t plus 1 is equal to q shifted left 2 times. एक ही क्लॉक साइकिल में अगर मैंने एक इसको ऐसे लेके आना था तो पहले एक दफा शिफ्ट करता, Q2 इधर आता, फिर भी शिफ्ट करता, Q1 इधर आता। अगर मैंने इकट्ठे एक ही क्लॉक साइकिल में दो दफा शिफ्ट करना है कि ये चीज इधर आ जाए एकदम से छलांग मार के, मुझे ये दो क्लॉक साइकिल ना देने पड़े, तो आई विल सिलेक्ट Q2 है, Q1 है। सिमिलरली 1 0 0 के लिए Q0 विल कम हियर। That really means that after clock cycle, I will be doing this. Qt plus 1 is equal to Q3 shifted left 3 times. In one clock cycle, I will be able to shift left. Same case is here. So here Q4 will become equal to Q3. Here Q5 will become equal to Q3. Here Q6 will become equal to Q3. So I can do both shift left and shift right 1 times, 2 times, and 3 times, both directions. Shift left and shift right 3 times in one clock cycle. So with every D input, we have this. So when I shift it to Q0, यहाँ पे आता है shift होके, तो Q0 की जगह पे क्या आएगा? Q0 शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे तो ये तीनों में जीरो मूव करता है कंप्यूटर के अंदर. We have 0 moving in to all of these 3 values that are vacant. All 3 of them will be moved in with 0. And this is done in one clock cycle. So कंप्यूटर में जब मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन देता हूँ Q2, it doesn't take एक एक करके, वो एक क्लॉक साइकिल करके नहीं करेगा. या अगर मैं Q में कहता हूँ ये वाली चीज कि x equal to x shifted left 8 times, इसका मतलब कि उसमें हर एक के जो है ना डी फ्लिप फ्लॉप, उसके अंदर 8 ऊपर के नेबर भी हैं, 8 नीचे के नेबर भी हैं. इतना बड़ा यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर है.
और 16 बिट शिफ्टिंग के लिए इतना बड़ा मल्टीप्लेक्सर है हर एक इनपुट पे कि यू कैन सिलेक्ट 16 में से इधर की 16 में से कोई एक सिलेक्ट कर लें या इधर की 16 में से कोई एक सिलेक्ट कर लें. In one clock cycle you will be able to shift in 16 times, 15 times, in just one clock cycle. You can shift it 16 times, 50 times, 12 times, 13 times. So neighbor का neighbor आपने लेके आना है या neighbor के neighbor का neighbor लेके आना है, कौन सी value यहाँ पे लेके आनी है. So by extending this multiplexer and give it all the choices of the neighbors on the left side and all the neighbors on the right side, we can. So एक जो 32 बिट का प्रोसेसर है उसमें आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा शिफ्ट रजिस्टर होगा, कितनी ज्यादा उसके अंदर पॉसिबिलिटीज होंगी that you can shift it one clock cycle. I'll give you an example here. Neighbor to neighbor, neighbor to neighbor. इधर से मुझे एक लतीफा याद आ गया. लतीफा के वो मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक दो हम मुर्गाबी पकड़ के मार के ले आए घर में, तो उन्होंने पकाई शोरबा शोरबा, सोचा कि आज सूप पीते हैं, सूप बनाया उसका. तो बात मोहल्ले में फैल गई कि मुल्ला नसीरुद्दीन साहब जो हैं वो मुर्गाबी मार के लेके आए और वो सूप एंजॉय कर रहे हैं. खैर दरवाजे पे नाक होती है, कौन है जी आप? मैं जी आपका हमसाया हूँ, आई हर्ड के आपने मुर्गाबी मारी, मुझे भी थोड़ा सूप दें. उनको एक प्याली सूप पेश कर दिया जाता है. फिर आता है कि जी मैं नेबर का नेबर हूँ, मुझे भी दें, उनको भी एक प्याली सूप दे देते हैं. और शाम तक लोग आते रहते हैं कि मैं नेबर के नेबर का नेबर हूँ. एंड में जो आता है उसको गर्म पानी पिला दिया जाता है. तो वो कहते हैं ये तो गर्म पानी है. वो कहते हैं ये जो मुर्गाबी मारी थी ये उसके सूप का सूप है, तो यही है वो, आप पी लें इसको चुप कर. तो सेम वे हियर, नेबर से नेबर से नेबर से नेबर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 16 बिट का नंबर है, फर्ज करें 10111010 4 4 8 4 12 और 16 का नंबर. अब अगर मैं ये x है, 16 बिट का इंटीजर है, अगर x को मैं कहता हूँ x इक्वल टू x शिफ्टेड लेफ्ट 4 टाइम्स, तो आपका ख्याल है ये 4 क्लॉक साइकिल लगेगी? ये तो बहुत स्लो हो जाएगा काम. तो 4 टाइम्स का मतलब ये है कि ये वैल्यू कहां पे जाएगी? 4 टाइम्स 1 2 3 4, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी. यहाँ पर क्या होगा? 4 जीरो मूव कर जाएंगे. तो इसका मतलब ये है, सेम केस with this one, you can see this value moving, this value is moving here, this value is moving here, this value is moving here. So is this value here, this value is neighbors, 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 neighbor. So 4 times shift left. So you have all the neighbors available, all of these values available to one single input. So you can shift this here, you can shift his here, and you can shift all of them wherever you want. So a huge multiplexer that can do that. So this is 4 times shift, and this will only take 1 clock cycle. So this is called barrel shifter. Barrel की spelling क्या होता है? I hope this is the spelling for barrel. Barrel shifter. Barrel means this is a huge circuit. Barrel shifter. So arithmetic unit, logic unit, they are in their own. They are very big circuits, and barrel shifter is not, to taken lightly.
ask for a very big circuit barrel shifter. So it can shift in one clock cycle. A 64-bit integer, it can shift in 64 times in one clock cycle. So that's an amazing circuit. Anyway, लोग किधर चले गए? साथ रह गए? Okay, thank you very much. Let's end this lecture today. कोई question तो नहीं है? मसना? हाजरा? Anyone? नो सर नहीं है. Barrel shifting समझ आ गई आपको? यस सर. How will you define in your? हाँ जी हाजरा, आपका क्या question? सर जो 4-bit शिफ्टिंग वाला जो सर्किट आपने बनाया था उसमें why was it possible to move to shift left by 2? Was it possible? हाँ उसमें like would you have to have a better like a bigger multiplexer? हम bigger multiplexer बना दिया ना, 8-to-1 multiplexer. We had 8-to-1 multiplexer है. So 8-to-1 multiplexer. If I Q3 की बजाय Q2 आएगा तो एक दफा शिफ्ट होगा ना. अगर मैं Q3 की बजाय नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में Q1 डाल दूं फिर क्या होगा? ये वैल्यू यहाँ पे आ जाए, शिफ्ट बाय 2 हो जाएगा. इसी तरह अगर शिफ्ट राइट करना है तो ये 0.5 अगर मैं Q5 Q3 में डाल दूंगा तो दो दफा शिफ्ट हो जाएगा एक ही क्लॉक साइकिल. राइट. सेम केस यू कैन थिंक अबाउट Q4. Q4 में Q3 Q2 Q1 आ रहे हैं, इधर से Q5 Q6 Q7 आ रहे हैं. Q4 में अगर Q3 आ जाएगा तो एक दफा शिफ्ट होगा, Q2 जाएगा दो दफा, Q1 जाएगा तो 3 दफा शिफ्ट होगा. और इधर से राइट वाली साइड पे अगर करना Q5 जाएगा तो एक दफा शिफ्ट राइट होगा, Q6 जाएगा दो दफा, Q7 जाएगा तो 3 दफा शिफ्ट होगा. Same case with Q5, you can think about 3 neighbors on this side and 3 neighbors on this side. Here you have zeros already installed somewhere. So Q5 में या 6 जा सकता है या 7 जा सकता है या 0 जा सकता है. If you are shifting right. हर एक के 3-3 इधर से नेबर की एक्सेस उसको दे दी हुई है. 3 नेबर ये हैं राइट साइड के, 3 नेबर ये हैं लेफ्ट साइड. So it can move any value in the next clock cycle. ये Q3 के लिए, Q2 के लिए भी इस तरह 3-3 वैल्यूज होंगी, Q1 के लिए भी इस तरह से 3-3 वैल्यूज होंगी, Q0 के लिए भी इस तरह से होंगी. So that way you can shift many times in just one single clock cycle. Very powerful circuit, very powerful circuit. वरना तो एक इंटीजर को मैंने x shifted left 16 टाइम्स करना है तो ये तो 16 क्लॉक साइकिल लग जाएंगे, which is too much. Hardware can help. You build a huge hardware. So this shows you कि किस तरह से हार्डवेयर और टाइम्स आपस में किस तरह से compete करते हैं कि bigger hardware less time, smaller hardware more time. So you can see the give and take right away over there. किस तरह से they can do that. ठीक है, समझ आ गई? हाँ भाई हाजरा. Yes sir. Anyone else? Anybody else? नहीं सर आ गई समझ. All right. So thank you very much. See you next time.